271 last orders. Calculate last orders tax adjusted trading loss for the 10-month period ended 31st of January 2023. Your computation should come in from loss figure 2,76,480. Operating loss 2,76,480. कैसे शुरू कर रहा हूँ डिप्रिसिएशन माइनस किया था डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन 9460 minus counseling services provided to employees who were made redundant, allowed pension contributions made on behalf of employees, allowed employer class 1 NIC contributions allowed, class 1 allowed, employee bonus declared but unpaid. These will not be paid during 2023. So ये bonus declared but not paid. Bonus declared but not paid. 10400. उसके बाद lease of the car. The lease is in respect of the car with fuel emission 45 44 grams per kilometer. 50 grams की नहीं है सुधा सेकंड ओके ठीक है ना लीज का जीरो उसके बाद अदर एक्सपेंसेस क्या क्या अलाउड नहीं है एंडरिंग यूके सप्लायर्स नॉट अलाउड ओवरसीज कस्टमर्स नॉट अलाउड क्यूसीडी नॉट अलाउड सारे नॉट अलाउड नहीं होते हैं ये सप्लायर्स एंटरटेनिंग ओवरसीज कस्टमर्स overseas customers, then qualifying charitable donations 1920 वैट में ओवरसीज कस्टमर्स का वी कैन क्लेम यहाँ पे ओवरसीज कस्टमर्स इज नॉट अलाउड 800 हाँ 800 ही है चलो नाइस उसके बाद प्रॉपर्टी बिजनेस इनकम Last orders let out a freehold office building. The following income and expenditures are received or incurred during the final 12-month period of trading. Let's check. नीचे इधर तक करेंगे disallowed expenses tax adjusted trading loss before capital allowances after capital allowances less capital allowances क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है तो इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे वरना हम यूजुअली माइनस करते हैं यहाँ पे इस सम में लॉस है तो अगेन डिसलॉरेशन हम ऐड करते थे प्रॉफिट में और लॉस में हम वही चीज माइनस करेंगे प्रॉपर्टी इनकम रेंट फॉर 6 मंथ्स पीरियड एंडेड 31st ऑफ जुलाई इसमें एक्चुअल बेसिस पे चलता है कंपनी के लिए कर रहे हैं राइट लास्ट ऑर्डर लिमिटेड तो हम कंपनी के लिए कर रहे हैं तो इसलिए इसमें रेंट फॉर द क्वार्टर एंडेड 31st of July 2022
अप्रैल मई जून जुलाई, सो आई थिंक 9200 इंटू 4/6 होगा इनकम। एक्सपेंसेस, नो व्हाट हैपेंड, वेट। यहाँ पे आता है इंश्योरेंस फॉर 12 month पीरियड एंडेड 31st of January, सो जनवरी 31st of January, तो फेब और मार्च का नहीं आएगा एज गुड एज, सो क्या था ये, इंश्योरेंस। Rent paid for the month ended, for 6 months ended 31st of January, 19200, repairs following a fire not covered by insurance, repairs following fire 7700। हमारी प्रॉपर्टी इनकम आती है इतनी, प्रॉपर्टी इनकम नाउ वी हैव इतना ही। मार्जिबल $400, cost of acquisition allowance, chargeable gains, note one, wait, only one, control C, V, two, अगर ये हो गया। Capital allowances, particulars, all of the items included in the main pool was sold for 13,600 on
31st of January 2023 with none of the items for more than the original cost. Last order has previously always been its accounts. Okay. Are they closing what? I think they're closing, right? मतलब अभी क्लोज हो मतलब बैलेंस अलाउंस ही आएगा इस केस में. सोल्ड ऑल आइटम्स. कितने बेचे हमने? 13,600 में बेच दिए ना हमने सारे आइटम्स, तो हमें मिलेगा एक बैलेंस अलाउंस. बैलेंस अलाउंस. अलाउंस ऐड हो गया. वर्किंग नोट नंबर 3. चेक करते कितना सही कितना गलत आया. तब तो ऑलमोस्ट सारी चीजें ठीक ठाक ही गई है. 271 के लिए करना 120. 264060. 264060. हमें ट्रैक्टर से ट्रेडिंग लॉस तक ही ढूंढना था. क्या? ट्रैक्टर से ट्रेडिंग लॉस तक ही ढूंढना था. टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस यहाँ तक वी आर ऑल करेक्ट, तो यहाँ तक ये सही है. ये चीज मैं अभी इधर लिख देता हूँ. मुझे लगता है इसका क्वेश्चन नंबर 2 में अज्यूमिंग दैट लास्ट ऑर्डर क्लेम्स रिलीफ फॉर ट्रेडिंग लॉसेस अगेंस्ट टोटल प्रॉफिट फॉर द 10 month period in January, calculate company's taxable total profits for this period. Taxable total profits for this period. Was that possible? अच्छा, गैस्ट्रो लिमिटेड. हाँ हाँ हाँ. लास्ट ऑर्डर ओन टू 80% ऑफ गैस्ट्रो. दूसरा जिसमें लास्ट ऑर्डर क्लेम्स रिलीफ फॉर ट्रेडिंग ऑफ अगेंस्ट टोटल प्रॉफिट फॉर द 10 month period. नहीं, बट टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट ढूंढना तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमें लॉस आ रहा है. वी हैव टू ऐड क्यूसीडी आल्सो गाइस, बस वो एक चीज छोटी सी याद रखनी पड़ेगी. अच्छा, रिमेनिंग आइटम्स के ऊपर assuming that last order limited claims relief for its trading loss against total profit for 10 month period ended, calculate company's taxable total profits. ओके, तो हमें अज्यूम करके चलना है कि कंपनी ये प्रॉफिट किसी और किसी के साथ एडजस्ट करेगी और हमें बाकी का सम सॉल्व करना है. ओके. टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स. देन लेस होगा यहाँ से क्यूसीडीज. लेस क्यूसीडीज. क्यूसीडीज हमें अमाउंट ऊपर दी गई थी, वो थी 800 रुपये. ये रही. ये हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स विच इज 56,500. ओ नो. नो, दैट्स. ओ, वी हैव टू क्लेम इट अगेंस्ट दिस फॉर दीज प्रॉफिट्स. ओके. ट्रेडिंग लॉस नहीं है, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स
less loss relief claim made against trading profits 57300. So इसको जीरो आता है एक्चुअली ये कंट्रोल ये less QCD wasted then this will go wasted and फिर ये आंसर आता है B part. Last is C part. Explain the alternative ways in which loss limited unused trading loss for the 10-month period ended 31st of January could be relieved. Alternative ways in which the unused trading loss for the 10-month period ended 31st of January 2023 could be relieved are as follows. As Last Orders Limited is closing their is ceasing to trade, thus it can claim terminal loss relief and claim the trading loss for the previous 3 years, that is 36 months, on LIFO basis. नेक्स्ट नहीं, इधर अपन और भी डाल सकते हैं कि टैक्स रिफंड विल बी अचीव्ड इफ डन सो। और उसके पहले उसके बाद और उपाय क्या है, हाँ, गैस्ट्रो लिमिटेड में लास्ट ऑर्डर लिमिटेड हैज 80% शेयर, so thus it can claim its trading loss against गैस्ट्रो लिमिटेड प्रॉफिट्स, ऐसा करके हम बता सकते हैं। ये रहा, the trading loss can be relieved against last orders total profits for the previous 3 years. Trading loss can be relieved against the last order limited for total profit for the previous 3 years, latest year first, because it is terminal loss. Trading loss can be surrendered to Gastro Limited because there is a 75 group relationship. The amount surrendered will be restricted to 10/12. हाँ, ये मैं नहीं बोला कि the amount surrendered will be restricted to 10/12 of Gastro Limited's taxable total profits for the year ended 31st of March 2023. There is नॉट अ ग्रुप रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट लिमिटेड, वो बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक और फर्म का नाम दिया था गवर्नमेंट लिमिटेड विच हैज 20% शेयर, तो उसको बताने की जरूरत तो नहीं है, बट स्टिल दे सेड कि देयर इज नो ग्रुप रिलेशन, तो नो ग्रुप रिलीफ क्लेम इज पॉसिबल। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस एंड बाय।